YouTube live and recording plus. Leela, you'll record? Okay, so hi everyone. We are very excited for today's Jaatre. We have Sharmila as our guest and Nimmi also as our guest today. So both of them are passionate about what they're doing, and today they'll be sharing their journey of passion. So let's start with Sharmila. So a little update on how we'll go. The flow would be like Sharmila, you'll be sharing your journey and maybe a little bit in detail about dot art, and then people who have in between, if you have questions, you can ask, and by the end of when she finishes her sharing, you can ask your questions, and then we move on with Nimmi. Nimmi, you're here. Where are you? Yes, Nimmi is here. So hi Nimmi. Hi. So Nimmi will be sharing about her passion for indoor plants and gardening, and then everybody can ask Nimmi her questions, your questions, and then by the end, if Sharmila and Nimmi both of you are there on board, then we can ask common questions, and then we can end. And in between, anytime Sharmila or Nimmi, you feel that you want to leave or you have some other work, maybe you can just do that also. Yeah. Cool. So let's start, Sharmila. We are super excited. Hi. First and foremost, I think I should thank Preeti, Pranav, Aditi, Ratnesh. This is the third or the fourth time that I am there on the Aarohi platform. And it's always a joy to be part of Aarohi Sessions. And also that, to tell all of y'all, I'm going to be on the other side interviewing Aditi and Ratnesh on Sunday. So we're going to be doing a Sunday live session with Aditi and Ratnesh on the Homeschooling India Facebook group platform. So I'm equally excited about that, and I felt I should start today by sharing about, just informing all of y'all that, so far I've come and been a guest, and now they are going to be my guests too. And now to begin with my passion, all my work around dot art. I did put in a few points. So before, let me just start by sharing who am I and what I do. There are quite a few known faces. Ruchika knows me quite well. And I can see Mishti. Her back is seen right now. But apart from Pranav, Preeti, I know them also pretty well. So I was so excited about this session because this is not about me being an unschooling mom. This is about me and my passion. So I said, I'm not going to introduce myself as an unschooling mom to three, but I'm going to introduce myself as somebody who's a self-learner and who has found a passion in doing dot art. And I have found this passion while I was in the deschooling process, and I was deschooling myself and my kids. So, and my entire life, I think I was deschooling at that time. And it was also the period of lockdown. So lockdown in the COVID days had just started. And, it was, I think, somewhere around beginning of April in 2020. And I was like super bored because there was nothing much to do. We had been at home for more than a month, and there was and we were in Mumbai at that time, smaller house, small walls. We were itching to go out, but apart from our mandatory walks with our dog, nothing was allowed. So we were like absolutely reaching a frustration stage because we were so used to being outside all the time.
And that was when I spotted a dot art that I had done some years ago. And I had just done one piece at that time, and that was done just out of a fancy. I had some colors. I said, okay, let me try something different, and I just did it. And then had come to know that it's called dot art. So I said, why not? Let me just pick up some paper and do it. We are an artist's house. Everybody at home is into art, and so we always had lots of colors and so on. And that's how I restarted, and then I made one, then another, then another. I think in the month of May, I must have made at least 2 or 3 pieces every day. And I used to work on any medium at that time. It could be just some card paper lying at home or some waste paper. It could be anything that was just there at home. I would just pick it up and I would start dotting. Gradually, as I, got more and more immersed into it, I realized that I wanted to move on from any paper or this to some other mediums. So searched and looked for places where I could get canvases and other material, and found somebody who could deliver material at home and even paints at home. And then I got the dotting tools. I joined a few Facebook groups on dot art and started following people on Pinterest, and then gradually, dot by dot, I think, piece by piece, my work improved. I started enjoying it so much. And it became a very meditative process for me. It was more of a meditation. It was more of, it was a space where I discovered myself, me as a person, me as a being. It helped me process and reflect on a lot of things that were happening around, or whatever happened with my children and so on. And the journey just went on and on. I started dotting on canvases, then MDF boards, then glass bottles, pottery items, various things. And masks, I started dotting masks too. It was a joyful experience, dotting masks also. So variety of things I got into. And, whenever I used to dot, my family used to feel that, okay, this is a time to leave her alone. Just let her do what she wants to, and not intrude or not force upon her or ask her ki lunch ready ho gaya hai kya, yeah, what about breakfast, and aren't you going to sleep tonight? Because once you start working on something, you wanted to just go on and on and on. So that was how my passion developed, and I would completely get lost in whatever I was doing. In fact, I'll ask Leela to share my Facebook page, where I'll show you some of my work, and then maybe we can, take questions. If we do it in a question answer way, I think I might be able to answer more. I'm kind of lost for words right now. So Leela, can you share my page? And then the photos on it, so I can sharing. Yeah. This is from your photos. Yes. So so a whole lot of my pieces, the first one that you see, the orange one, is what I made recently. So it's just something on a piece of MDF board, and the ideas just came in. So I initially, I do try and make some outline of what is there in my mind, but then the end product is completely different, because as my thoughts move, my work moves. Maybe we can move on. So
So that's an owl. I love owls. So you will find quite a few owls in my work. Yeah, you can move on. Maybe you can keep scrolling. Okay, so these are some of the rocks. These are recent rocks. Then those are flamingos. Then yeah, these are a couple of mobile stands that I made for. I gifted them. This is something I made for my sister. She's put it up in her house in the US. Then yeah. So this is, I guess many of you all know Rupesh Gesota. He's quite famous around everywhere. So I made a guitar for him, and that's me with him. He was super happy on seeing that guitar. Then, yeah. So this is something I made for Kiran. Kiran is a dear friend, and this I dotted an old guitar that belonged to Seema, who's also there in the picture. And we together gifted it to Kiran because she's a musician and she plays the guitar. So, by the way, the Rupesh one was a ukulele, not a guitar. So, sorry. Yeah. And you can go on. So that's a bag that I made for Seema for her last birthday. And today is her next birthday, and I don't have any dotted things for her, but I'll be getting her something. Yeah. This is the ukulele at my home. So, I also make mistakes, lots of mistakes. So first I painted the ukulele orange, but it didn't work out. Then I painted it blue, and then something very interesting came out. So yeah, you can Sharmila, just a Mm. quick question. So when Mm. you paint it orange, is it a base, like the base color? So is it Yeah. acrylic only that you use, or is there any other form of paint that you can use? No, I use acrylic mainly. But when you use glass bottles, you need something that stays because acrylic gets peeled off. So if you're working on glass, you need to work on other mediums. So yeah. Yeah, you can go ahead. So rocks, painting river rocks has been a passion. I just love painting river rocks. And these are actual, little pieces that I have picked up from, some of them have been picked up from Himachal, some from Neral. It's always been a joy painting, dotting rocks. Yeah. So, Leela, you can take it ahead. That's my page. The masks you can see that I have made, some of them. Okay, going back. Maybe you just scroll down. I'll ask you to. So you can stop at the elephant that's there. So, I think this page can be shared with everybody and they can go through all the work that I have. Done a lot of things, have taken I did take a few commission projects also, like the Taj Mahal was a commission project. Some of these rocks were commission projects. And but I think most of my work I gift or I keep them at home itself. So this is one of my favorite pieces, which is kept right in front of my house. So yeah. So this is all the work that I do. I also doodle, so I also am into mandala and Zentangles and so on. So you might see some of those also in so this is more of my beginning work. So if you go from what I used to do in the beginning to now, you'll notice the difference. You'll see how I've got better and better at what I'm at dotting. Yes. Yeah. So yeah, so that's about me. Maybe I can just take questions.
Pranav, for you, I think I'll expect you to come home and pick it up. Along with family. So with this, you also share that, you also can share that, say that very clearly that any passion can also convert into a profession, right? Means, Yeah. So any passion can get converted into a profession. I'll share what the journey that I have gone through. So I am not a person who can make more pieces of the same design. So when I started taking orders for masks, I would get people telling me, you make this design for me, just this way. And I realized that I can't do that. I just simply can't, because they are all hand painted. Every piece depends on the mood I am in, and it's a piece of art, right? So you can't replicate it just like that. So finally, I had to tell a couple of people that, you just tell me what your idea is. I'll create something. You take it. If you feel it doesn't go by what you want, then I'm okay with that. But I cannot copy a design and make it for you. So that was one thing, that was one stand that I took. The other stand that I took was I could never decide a value for my work. And so then I consciously actually decided that I'm not, I'll just accept whatever is given for most of my work, and I don't make it a profession. I keep it as a hobby where I do it for my satisfaction and not for earning money. I'll earn money somewhere else, and that's why I'm working today. But again, I'm doing something that I like. So that's a difference. But yeah. Okay, what kind of colors and instruments one should start with? I think you start with the bottled acrylic colors, Fevicryl or Camlin, both are good. And I think you can use just anything which has a round edge. It could be a toothpick, or the chopsticks, or the back of the paintbrush, earbud. It could just be anything which has a round edge. Pencils, the edge of the pencils, anything. And then when you feel that you are loving it and you want to take it ahead, then you invest in dotting tools. Because they do help, because they come in different sizes, and so you can decide on what tool to use for the size of the dot that you want. can you emphasize a little on the consistency of color? Because that I think is very Yes. important. True. In fact, you need colors that are fresh. Even if your colors go dry, to get them back to the consistency is a challenge. There are times when even I have not got the exact consistency, and if the consistency is not right, the dots flow. If they're too dry, they don't look like proper dots, and if it is too liquidy, they just flow and they don't remain as dots. So to get that consistency, and that requires a lot of effort. It also depends on the temperature, how cool it is, how hot it is, how humid it is, that your colors, the consistency depends. So if it is a very humid climate, a little dry color may also give you good dots. But if it's a dry atmosphere, your colors dry up so quickly. The minute you just dip your tool, you will have a problem. So so that's a huge challenge. And that comes with practice. And when you are immersed in something, I think you don't mind doing that practice and trying it out on your own. Yeah.
Acha, just a question. Does it get too monotonous doing the dots, like beyond a point? I know it's like you love it and you're passionate about it, but हाँ, uh, हाँ. does it come to that stage where you feel like it's like करना है अभी खाली finish करना है? No, actually, that will happen when I'm copying a design, right? Because then you're trying to replicate something. Here, my designs are emerging with what I do. So, for me, going to the next level is always a joy. It doesn't, become monotonous or anything. And I give myself the freedom to do whatever. So even if I come with a background and an outline of what I want to do, if along the way, if I want to change it and want to bring in something different, I do. So that, kills the monotony in my work, and my work is, it's always a joyful experience. And even the colors that I choose, I've also faltered many times. I have ruined also many pieces. And I've always seen that it's always attached to what I'm thinking at that point of time. So if my mood is not right, or if I'm disturbed by something, then my daughter doesn't come out well. But when I am synchronized, if I'm one, my mind, my heart, everything is just in balance, then my daughter comes out very well. So that is also something maybe other artists must have experienced, that when you are just in it, you're one, everything just comes out well. And when you do not feel one with it, then leave it for some time. Yeah, then you just leave it Come for back. some time and then come back to it, do something else. So mind is agitated, you never get a good artwork out. When it's not agitated, when it's open, then it's much easier. Yeah. Awesome. So that was very, very beautiful, Sharmila. Should we now change gears and invite Nimmi? And then Yes. if you are here also till the end, Sharmila, then maybe some common questions we can take later. Okay, And fine. if you have something, then you can also carry on. It's okay. Sure, Whatever. sure. I could Yeah? do that. I could do that. Yeah. 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 So hi, Nimmi. Hi. Leela, can you spotlight Nimmi now? Yeah. Hi. So Nimmi is from Lucknow and she has a beautiful house where the whole house is interior done by her. Like all the plants and everything are decorated and kept by her. So let's see what she has to say about her journey to home gardening. Hello, everyone. I am Hi. new to this platform, so a little bit hesitant also, but good. Good to meet you all. Gardening is something everybody, I think, loves plant. एक आपके आसपास ग्रीनरी एक पॉजिटिविटी देती है आपको. So I started just as कि एक दो plants घर में रखे हैं. Gradually I started learning about bonsais. So basically I am a bonsai artist. And initially मैंने जो किया वो थोड़ा बहुत ऐसे ही, then कुछ books purchase करी जिनसे थोड़ा थोड़ा सा read करना शुरू किया. And after some time I came to know कि यहाँ पर लखनऊ में एक bonsai group है, एक आंटी हैं जो कि bonsai art proper सिखाती हैं. मैंने उनकी classes join की. And it is now almost 15 years now कि वो classes मेरी continue हैं अभी भी. क्योंकि कोई भी art है, आप कभी you never stop learning. कुछ ना कुछ टेक्निक्स, कुछ ना कुछ चीजें आती जाती हैं जो आपको सीखनी होती हैं. और प्लांट्स एक लिविंग चीज है तो उसमें रोज कुछ ना कुछ चेंजेस आते ही हैं, तो बहुत कुछ होता है उसमें सीखने के लिए. So that is all my journey is. Now I can show you my garden.
and my plants in house. I always keep few plants in my house. Like hope you all can see, these are small plants which I have kept inside. And very small also, like these tiny ones, syngoniums. मैं यहाँ लखनऊ में एक सोसाइटी में रहती हूँ, मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में, और इसमें मेरा घर ग्राउंड फ्लोर पे है. तो लकीली मेरे पास थोड़ा ऑप्शन था कि मैं कुछ अपने प्लांट्स का शौक कंटिन्यू कर सकूं यहाँ पर. सो दिस इज माय बालकनी. These all are small plants. This area gets partial sunlight, not in summer, but in winters. This area is full of sunlight in winters. This was a waterfall, और इसमें कुछ इशू हो गया था कि पानी सारा ओवरफ्लो कर जाता था. तो मैंने इसको भी एक रॉक की तरह से एक हिल का काइंड करके और इसमें भी प्लांट लगा दिए हैं. And these are my bonsais. These all are variety of ficus. Hope I am able to show you properly. Yes, it is very nice. एक्चुअली बैक साइड की हेज काफी ग्रो कर गई है, तो शायद आप लोग को बैक के प्लांट्स ज्यादा दिख रहे होंगे. These are my tiny bonsais. Can see these all are ficus. Till here, all are ficus. And I have one wall also. This is these all are my bonsais. These in a group, this plant is called Divi Divi. It is hunting. And Is it hand for me only or the for group of everyone? Aarohi. For everyone. Yeah, I think she's in the garden. Maybe that's why network. Oh, I think you got logged out. Nimmi. She's Yeah, there. she's I not can there. see her name, Nimmi Yeah. Malhotra. She's Nimmi, just check if there is any network issue. Your camera and audio both are off. You're muted. Yeah, sorry. Sorry. Yeah, it's perfect. This adenium is 25 years old, almost 25 years old. Can any plant be turned into bonsai? Most of. But It's saying for my screen, Nimmi Malhotra's network bandwidth is low. Yeah, I think Maybe maybe because of the garden thing. yeah, you want to switch off your video? What will she Huh? show me? Maybe. Oh, She'll switch off Hello? her video, then what will she show? okay. Yeah.
This is a small rockery. And this is the water plant. We call it Jalkumbi. I don't know what do we call it. Is it like same something like lotus or something, like is it It is actually related? a wild plant. Like ये rivers और उन सब में grow कर जाता है और पूरा water को choke कर देता है. लेकिन इसमें बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स आते हैं. आज नहीं है, बट अक्सर इसमें मॉर्निंग में खिलते हैं और इवनिंग तक वो विल्ट कर जाते हैं. So this is all I have. This area is full of sunlight. आज थोड़ा सा cloudy है. Otherwise, this is full of sunlight. So plants को अच्छी sunlight भी मिल रही है. So they are growing well. Now, this is all about me and my plants. Maybe how did you start your journey? That would be nice. Like, how did you get interested? Who inspired you to start with this kind? Probably my husband. उनको artificial plants बिल्कुल पसंद नहीं है. So whenever I try to put something, he said कि artificial क्यों लगाने हैं, real लगाओ. That's when I started collecting plants and taking care of them. And gradually आप जब करते जाते हो तो आपको शायद अपने आप समझ भी आता जाता है. अगर आप अपने प्लांट्स को डेली वॉच करते हैं, यू कैन अंडरस्टैंड कि इसको क्या चाहिए. लाइक अगर वो पानी चाहिए, लीव्स उसकी विल्ट हो रही होंगी, या आप बहुत दिन तक अगर अंदर रखे हैं, लीव्स येलो हो रहे होंगे, तो वो ग्रेजुअली देखते देखते और जब वो ग्रो करते हैं तो जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो हैप्पीनेस मिलती है, दैट मोटिवेट्स यू. और तो बहुत अच्छा टाइम पास है. कहीं इधर उधर कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, कहीं जाने की. मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपनी प्लांट्स के साथ स्पेंड कर सकते हो. सो so good. Since how long are you into this? Like you shared that 15 years से आपने bonsai के वो किया है, learning किया है, but हाँ. apart from that, almost 25 years or maybe more. Almost, yes. I have a question for you, Nimmi. Suppose like we have a lot of plants at my home place, and we feel it's very hard to manage. Like we can't go out, and who will water them? Like right now, if I'm in Bangalore and my home place is in Kerala, who will water them? Is like, so like, what do you do in that time? I have a privilege on being on the ground floor. So मैं जब भी बाहर जाती हूँ, अपने सारे प्लांट्स कोई भी अंदर नहीं छोड़ती हूँ, सब बाहर रख देती हूँ. और बाहर से बाहर माली आके मेरा वाटर कर देता है, या फिर किसी रिलेटिव के पास, मेरे रिलेटिव्स भी हैं यहीं, उनके पास कीज होती हैं कि वो देते हैं. और अगर जिन एरिया में डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है तो वहां पर फिर डेली वाटरिंग की जरूरत नहीं होती है. तो लाइक आपके बेंगलोर के वेदर तो थोड़ा ह्यूमिड है, हमारे यहाँ तो बहुत ड्राई है. लाइक पीक समर्स में इट्स वेरी ड्राई. हमें दोनों टाइम वाटरिंग करनी पड़ती है पीक समर्स में. पर आपके यहाँ बेंगलोर टाइप के वेदर में तो अगर आपको बाहर जाना है तो आप रूम के इनसाइड तो बिल्कुल नहीं छोड़ो. कहीं भी बालकनी में रखकर आप अगर 2-3 दिन के लिए हैं, आप वाटर कर जाओ, दे विल सर्वाइव 2-3 दिन. अगर लंबा है तो फिर आपको कुछ ना कुछ ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करना होगा. मे बी आप उसे फ्लैट के बाहर रखो या किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर जाओ कि वो वाटर करे उसको. तब वो थोड़ा आप अपना चेक कर सकते हो कि आज आपने पानी दिया, कितने टाइम में आपकी सॉइल ड्राई दिख रही, उतने दिन का साइकिल आप मैनेज कर सकते.
Okay. Anything? Bani, you have any questions? Um, why did you not plant kitchen garden since you have the space and all? किचन गार्डन एक्चुअली इस साइड पर एक तो मेरे बोनसाई प्लांट्स बहुत सारे हैं और सबको सनलाइट चाहिए। मेरे पास थोड़ा सा एरिया है पीछे, लेकिन वहां पर सनलाइट नहीं आती, और किचन गार्डन थोड़ा सा मेसी टाइप भी होता है, तो फिर किचन गार्डन इसीलिए मैंने प्लांट नहीं किया, क्योंकि ये प्लांट्स बहुत स्पेस लेते हैं एंड दे नीड सनलाइट, प्लेंटी ऑफ सनलाइट। एंड अभी विंटर्स में सारे सीजनल्स भी लगाने होते हैं, मुझे तो उतना स्पेस नहीं है फिर इसीलिए। अच्छा निम्मी जी, इसमें आपको द सॉइल दैट यू यूज, सॉइल हाँ। अलग अलग होते हैं हर एक पौधे के लिए, या कैसे, हाउ डू यू मैनेज दैट? लाइक हर एक पौधे का तो नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन हाँ जो हमारे सक्लेंट्स या कैक्टस होते हैं उनका सॉइल डिफरेंट होता है। लाइक नॉर्मल जो हम बनाएंगे तो उसमें हमारे ऑफ कोर्स मैन्योर होगा, काउडंग मैन्योर, ओल्ड काउडंग मैन्योर, लीफ कंपोस्ट होगी, थोड़ा कोकोपीट जो कोकोनट का हस्क होता है वो मिलता है ब्रिक फॉर्म में, थोड़ा वो कोकोपीट होगा, एंड रिवर सैंड होगी। तो अगर हम सक्लेंट्स का या कैक्टस वगैरह का जो रखते हैं सॉइल, उसमें कोकोपीट नहीं रखते और उसमें ये सैंडी पार्ट ज्यादा कर देते हैं। लाइक हमारे जैसे डेजर्ट में होता है सैंड है, तो वो डिफरेंस होता है कि हमारी ये वाली सॉइल सैंडी ज्यादा होगी और नॉर्मल प्लांट्स की उतनी सैंडी नहीं होगी, उनमें कोकोपीट और कंपोस्टिंग ये चीज ज्यादा करेंगे। तो इसको कितना फ्रीक्वेंसी पे आपको सॉइल को, आई डोंट नो, मतलब रिफर्बिश करना पड़ता है या कैसे होता है? लाइक रेगुलरली सॉइल को कुछ करना पड़ता है? हाँ हाँ, देखिए बोनसाई पॉट्स क्योंकि बहुत शैलो होते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं होता है, तो हम कुछ ना कुछ, जैसे एनपीके आपने सुना होगा ना, एनपीके एक फर्टिलाइजर आते हैं, केमिकल हाँ। फर्टिलाइजर होता है या ये, तो वो एनपीके कई और नेम से भी मिलता है। तो लाइक वो एनपीके का हम लोग पाउचेस लेते हैं, तो एक पाउच, 1 पाउच इन 5 लीटर्स ऑफ वाटर, वो 5 ग्राम्स का करीब पाउच होता है। आप अप्रोक्सीमेट मानो कि 5 ग्राम्स इन 5 लीटर्स ऑफ वाटर, उसको डिसॉल्व करके फोर्टनाइटली हम इसमें डालते हैं। जब पीक समर्स होती है तब नहीं डालते, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा गर्म होता है और उसकी गर्मी से प्लांट्स और जल जाते हैं, पर ये डालते हैं। प्लस आप कुछ भी कंपोस्टिंग कर सकते हैं, लाइक आपके घर में चाय की पत्ती निकलती है, चाय की पत्ती को अच्छे से वॉश करके आप ड्राई कर लो और उसका पाउडर, या अगर आपके एगशेल्स हैं उनको वॉश करके सुखा लो, उसका पाउडर, इवन बनाना पील्स हैं, आप उनको पानी में 2 दिन डालकर रख दो, फिर वो पानी थोड़ा डाइल्यूट करके पूरा, मतलब अगर आपने 1 बॉटल पानी में 1 पील डाला हुआ है, उसमें करीब 2 बॉटल पानी और मिला लो, 1.5 से 2 बॉटल पानी, अगर कम भी होगा वो हार्म नहीं करेगा क्योंकि ये नेचुरल चीज है, वो आप दो प्लांट्स को, दे आर ऑल्सो वेरी गुड। तो ये और बनाना पील बॉटल है, ये कितने दिन रह सकता है मोस्टली, क्योंकि ये बनाना खराब हो जाए? नहीं, बनाना सॉरी, कितने दिन शेल्फ लाइफ कितनी होती है बनाना पील्स की? बनाना पील वाटर जो आप बोल रहे हैं? देखिए शेल्फ लाइफ को बहुत ज्यादा दिन तो नहीं, मैक्सिमम 2 दिन तक उसको हम फर्मेंट करते हैं और उसके बाद डाइल्यूट करके दे देते हैं। आप पील चाहे आप डिस्कार्ड कर दो, चाहे अगर आपके पास ज्यादा पॉट्स हैं आप उसको चॉप करके सॉइल में भी दबा सकते हो, लेकिन एक्सेस नहीं कि हाँ आप हर दूसरे दिन वो डाल रहे हो तो वो एक्सेस ऑफ पोटेशियम हो जाएगा, वो भी हार्म कर जाएगा। और बाकी जैसे ये रेनी सीजन है तो इसमें हम ऑलमोस्ट सारे बोनसाई पॉट्स, ओनली जो कि बहुत स्लो ग्रोइंग वेराइटीज हैं उनको छोड़ के बाकी सबको रिपॉट करते हैं। मतलब हम पूरा प्लांट निकाल कर उसकी पूरी ओल्ड सॉइल हटाकर, अगर एक्सेस रूट्स हैं रूट्स को ट्रिम करके और फ्रेश सॉइल के साथ उसको पॉट करते हैं फिर। और इसमें इंसेक्ट्स, सॉरी
हाँ जी, हाँ जी, आप पूछिए, मैं फिर बताती हूँ। नहीं, इंसेक्ट्स के लिए आप क्या पर्टिकुलरली कुछ कोई चीजें ऐड करते हैं सॉइल में इंसेक्ट्स के लिए, या कोई पेस्ट के लिए, या कुछ? पेस्ट के लिए नॉर्मल में तो अनलेस कोई अगर कुछ है उस पे पेस्ट तब तो, नहीं तो कोई केमिकल पेस्टिसाइड्स अवॉइड करते हैं। अब आजकल नीम ऑयल मिलने लगा है। आपको अगर कुछ भी पेस्ट है आपके लिए तो आप नीम ऑयल लो, और नीम ऑयल विद अ पिंच ऑफ वॉशिंग पाउडर। मतलब अगर आप 1 टीस्पून नीम ऑयल ले रहे हैं विद अ पिंच ऑफ वॉशिंग पाउडर, उसको आप उसका सॉल्यूशन बनाओ डाइल्यूट एकदम हल्का सा, और उसको किसी भी स्प्रे बॉटल में डालकर स्प्रे कर दो, या इवन आप अगर उसको रूट्स में भी दोगे तो वो हार्म नहीं करेगा। तो मोस्टली अब हम अवॉइड करते हैं कि रिसेंटली अब ये नीम केमिकल इतना ज्यादा मिलने लगा है, इफ्को का बहुत अच्छा आ रहा है, तो आप वो कर ले सकते हो उसको। इवन इफ्को में ही अभी काफी फर्टिलाइजर्स आ रहे हैं, इनका आप देख लेना, मिल जाएगा इजीली। सी सीक्रेट करके एक इनका फर्टिलाइजर आता है, उसकी बॉल्स हैं छोटी छोटी। तो अगर आपके छोटे पॉट्स हैं और आप 3-4 बॉल एक पॉट में थोड़ा सा होल डिग करिए, 3-4 बॉल्स उसमें डालकर और उसको ऊपर सॉइल से कवर कर दीजिए, तो अगर आप फोर्टनाइटली वो भी देते रहेंगे तो आपके प्लांट्स अच्छे रहेंगे उससे। बस सॉइल जो भी हो Do you प्लांट्स की। हाँ जी, सॉरी। carry on, carry on. हाँ, सॉइल थोड़ी बस पोरस होनी चाहिए, एकदम जो जमी हुई मिट्टी होती है उसमें प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं आती, इसीलिए हम लोग रिवर सैंड उसमें थोड़ी मिक्स करते हैं जिससे पोरस रहे। And depotting आप कह रहे थे, for what reason do you do depotting and put the bonsais again in another pot? रीपॉटिंग इसलिए क्योंकि एक साल में एक तो बोनसाई पॉट्स छोटे होते हैं और रूट्स की ग्रोथ अच्छी है, तो एक साल में उस सॉइल से न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है और वो एकदम रूट बाउंड हो जाता है कि फ्रेश रूट। प्लांट की ग्रोथ तब होती है जब उसमें फ्रेश रूट्स हो फीडिंग। जब हम उसको रूट ट्रिम करके और फ्रेश सॉइल में रिपॉट करते हैं तो वो रूट की ग्रोथ को एनहांस करता है और उससे फिर प्लांट में ग्रोथ आती है। Have you ever felt bad about any of the plants dying? Yeah, so many of them dies. After all the efforts, they die at times. Really feel bad, but can't help it. अपनी तरफ से जो जो चीजें हमें आती हैं कि हाँ हमें कुछ करना है, इसको एयर चाहिए, इसमें शायद कुछ पेस्टिसाइड डालने की जरूरत है, सब कुछ कर रहे होते हैं, बट एट टाइम्स प्लांट भी उस एनवायरनमेंट को भी एडजस्ट नहीं कर पाते। लाइक हम नर्सरी से लाए, नर्सरी में ज्यादातर प्लांट्स हम लोग क्या मिल रहे होते हैं, वो बेंगलोर और पूना से आ रहे होते हैं, और वहाँ की क्लाइमेट और हमारे यहाँ की क्लाइमेट बहुत डिफरेंट है। तो बहुत से और बहुत ब्यूटीफुल लीव्स होती हैं उनकी जो हम बड़े एक्साइटमेंट में लाते हैं, लेकिन वो हमारे वेदर के साथ एडजस्ट नहीं होते, तो दे डाई। तो आपके सोसाइटी के बच्चे जब भी खेल रहे होते हैं और कोई एक आध बॉल आपके बटके पे लग जाता है तो आपका कैसा रिएक्शन होता है? बहुत तो नहीं होता, हाँ होता तो है, पर बच्चे तो बच्चे ही हैं तो ठीक है, बट मोस्टली दे प्ले इन द लॉन, तो इस साइड मेरे साइड पे बॉल्स इतनी नहीं आती है। मतलब वो हार्म नहीं। हाँ जी, You add river sand to make soil porous. So, what is the ratio of soil and river sand? कितना लाइक soil कितना river sand? यूजुअली जिससे हम इसमें कंपोस्ट आपको मार्केट में मिलता है, तो हम लोग अगर आपको लीफ मोल्ड भी मिल जाए तो, नहीं तो 2 पार्ट हम कंपोस्ट डाल रहे होते हैं, ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स गार्डन सॉइल डाल रहे होते हैं, मिट्टी, और 1 पार्ट या इवन लेस उसमें ये डालते हैं रिवर सैंड। हाँ जी, बहुत ज्यादा रिवर होती है ना, वो भी हीट करती है क्योंकि प्लांट। और आप
रेड सैंड मिलती है, हमारे यहाँ नहीं मिलती, हमारे यहाँ प्लांट्स आते हैं उनमें रेड सैंड होती है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो, वो हमारे यहाँ नहीं मिलती। मिमी रेड सॉइल मिल जाता है, हाँ, तो आप तो यूज इट कर इज सकते हो सेम वो। कर सकते हैं। मतलब थोड़ी लूज सॉइल होनी चाहिए, एकदम हार्ड नहीं होनी चाहिए कि उसमें एयर ना जा रही। मिमी हाँ जी, मैं घर पर भी मैं कंपोस्ट बनाती हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो बना उसमें सकते। तो उसमें क्या क्या डालना होता है? देखिए, नॉर्मल में कंपोस्ट जो डालते हैं, बनाते हैं, तो उसमें हम एक लेयर डाल देते हैं पहले सॉइल की, हाँ और नॉर्मल प्रोपोर्शन होता है कि आप घर का किचन वेस्ट कुछ भी लीजिए आप, मतलब कुक्ड फूड नहीं, रॉ जितने भी हैं, जितने आपके पील्स हैं, वेजिटेबल पील्स हैं, फ्रूट पील्स हैं, वो आप कुछ भी लीजिए, तो वो एक लेयर वो, और एक लेयर ब्राउन मतलब ड्राई लीव्स की अच्छा प्रेफर्ड। हाँ, और अगर ब्राउन नहीं है तो फिर आप किचन वेस्ट का ही करो, लेकिन वो टाइम तो लेता है ज्यादा, 3-4 मंथ्स ले लेगा, बट हो जाता है रेडी। अगर हमारे उसमें पेस्टिसाइड्स आ गए और हमको पता नहीं है पेस्टिसाइड्स आ गए और हमने प्लांट में डाल दिया तो? किसमें? कंपोस्ट में आ गए? हाँ नहीं, कंपोस्ट में वैसे आपको ना, कंपोस्ट जब रेडी होगा, एक तो वो वाटरी होगा, और जब वो ड्राई होके आप उसको खोलोगे आपको दिखेगा उसमें, ऐसा नहीं होगा कि कोई वर्म्स हैं आपको नहीं दिख रहे हैं, और अगर दिखेगा तो फिर आपको कुछ भी, जैसे एक आता है पेस्टिसाइड रोगर, हम लोग रोगर का स्प्रे करते हैं, अगर फंगस होता है तो बाविस्टिन, ये 2-3 हैं, या साफ पाउडर आता है फंगस के लिए, फिर वो यूज करना पड़ता है हमें, साफ पाउडर को पानी में डिसॉल्व करके और वो डाल दिया, अगर आपको दिख रहा है पेस्ट। अगर पेस्ट नहीं है तो जबरदस्ती में कोई भी पेस्टिसाइड मत दीजिए। ठीक है, थैंक यू। Okay. Any more questions? Okay, so I think Sharmila is also here. So we Yeah. can have a common, like, we can open the floor for common questions You for just Sharmila. And yeah, you just hand over to Sharmila. I'm just coming in a minute. yeah. Okay. So any questions from both of them, you all can ask, or else we can wind up. For Sharmila, when you usually do dot art or any doodling anything, is it like do you use any other music, or are you playing anything else with it, or is the dot art the only thing you're doing? Because for me, when I'm doing some art, I find it's much more like helpful if I have some music playing. Yeah. So yes, I do have music at times playing in the background. Sometimes there is something, I'm watching a movie and I'm dotting. But what I've always seen is, as I get immersed into it, I forget to listen to whatever is going on around me. So yeah, maybe in the beginning, yes, I might have something around, but yeah, it's not that it has to be there. As I get immersed, it all goes away. Okay, thank you. Any other question? I have for Nimmi, for your indoor plants, do you have anything special to take care of, or are there any specific plants that only are indoor plants, or it is like you can just do whatever you want? You can keep all plants inside, but not for very, very long.
आप सोचें कि मैंने रख दिया, वो हम लोग बोलते हैं इंडोर प्लांट्स, बट कोई भी प्लांट्स ऐसा नहीं है एक्सेप्ट फॉर मनी प्लांट। इवन मनी प्लांट को भी अगर आप बहुत टाइम तक अंदर रखेंगे तो उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है, लीव्स का साइज छोटा हो जाएगा, ग्रोथ स्लो हो जाएगी। तो माय सजेशन इज कि आप अंदर रखें तो उसको 4 days मैक्सिमम अ वीक उतना टाइम दें, और उसके बाद आप उसको बाहर रख दें। अगर आपको इंडोर रखते हैं, आप 2 सेट ऑफ प्लांट्स बनाओ कि एक सेट को अंदर रखो और एक को ओपन में रखो, ओनली देन दे कैन सर्वाइव। और उस पर भी क्योंकि वेदर के हिसाब से प्लांट्स का रिस्पॉन्स अलग होता है, तो आप उसको वॉश करते रहो। अगर आपने अंदर रखा है, हो सकता है किसी प्लांट की 4 दिन बाद ही लीव्स येलो दिख रही हो आपको, या लीफ फॉल कर रहा हो। से हम लोग बहुत बोलते हैं कि हाँ जेड प्लांट, जेड इज ए इंडोर प्लांट। जेड इज नॉट अ इंडोर प्लांट, उसको आपको धूप रखनी है, जितनी अच्छी आप धूप दो रहे हो वो ग्रो करेगा। इवन ए स्नेक प्लांट भी आप उसको ये नहीं सोच सकते कि आप हमेशा अंदर रखें, तो उसको आप 15 दिन अंदर रख लो लेकिन फिर आप बाहर रखो। तो माय सजेशन इज कि आप अंदर रखो लेकिन ऑल्टरनेट करो। और अंदर भी हमारे वेदर में हम अंदर भी रखते हैं, 2 दिन बाद एकदम सॉइल उनकी ड्राई हो गई होती है, तो अंदर भी मुझे उनको पानी देना होता है। तो ऐसा नहीं है कि अंदर है तो आपको पानी नहीं देना होगा, अंदर भी देना पड़ेगा पानी। That's it. Okay. Anjali, you have anything, or do we have any more questions for both the guests, or Yeah, I we have can one. I wind have up? one question to both Sharmila and Nimmi ji. Yeah. So, आप जो भी कर रहे हैं, या both of you, whatever the dot art or the gardening part. So the knowledge about it you gained out of experience more, or you kind of refer to some stuff as in terms of some YouTube videos, or you read something, or it's more of like you experience, you try and do, and then you get better of it. Sharmila, you can. No, you can say first and I'll go next. I think both the things are here. बहुत सी चीजें हैं जो आप अपने प्लांट को ऑब्जर्व करोगे तो आपको शायद खुद समझ आएंगी, और बहुत सी चीजें हैं जो आपको लर्न करनी होंगी। जब हमने बोनसाइज करने शुरू हुए थे तब ये यूट्यूब और इंटरनेट कल्चर नहीं था, तो 1-2 बुक्स लेकर शुरू किया, उसमें से लर्न किया। और देन जब हमें ये बोनसाई ग्रुप मिला तो उससे बहुत नॉलेज मिली, और सब लोगों के एक्सपीरियंस मिले कि मेरा प्लांट ऐसा था, उस पर मैंने ये किया, ऐसा हो गया। तो बोथ द थिंग्स वर्क। अब मेरा घर कैसा है, वहां क्या सनलाइट मिल रही है प्लांट को, कितनी एयर मिल रही है, वो मुझे ऑब्जर्व करना है, और उसके हिसाब से अपने प्लांट की लोकेशन चेंज करनी। वो शायद आपको बुक रफली बता देगी कि आप इस एरिया में रखो, लेकिन वो एरिया आप क्या है कि नहीं ये आपको देखना है। तो इट्स लाइक दैट, दोनों चीज वर्क करती हैं। और अब बहुत अच्छी नॉलेज है यूट्यूब वगैरह पे भी, यू कैन टेक दैट। Yeah, thank you, Nimmi. Nimmi, I've learned so much about gardening. Gardening भी मेरा एक passion है आजकल. I don't do much because I have a full-time job, but so much to learn from you. And for Pranav's question, Pranav, most of it has been learning by doing. तो तुम करते जाओ, गलतियां करो, and you learn. But I do follow a few Facebook pages on dot art, and Pinterest में भी follow करती हूँ. And I have watched a lot of videos जहाँ पे people are doing dot art. So but the sense of proportion, sense of बड़े डॉट्स कहाँ यूज करने, छोटे कहाँ यूज करने, टेक्निक्स एंड ऑल have just come as I have done and as I have made more and more dots. पहले तो my work used to be with dots, the space between 2 dots was too much. Then as I started focusing more, wo space started reducing, the symmetry started coming on its own, and a whole lot of things started just coming. It's all about how much you focus.
जितना ज्यादा focus उतना detailing ज्यादा होता है. Then I also explored with, how to bring in the marble effect in your dots, how to have multiple dots. So start with a bigger, then have a smaller on it, even smaller on it, even smaller on it. So I explored those things also. So variety of things, if you're into it, then you will say कि अब और कुछ challenging करना है, and then you start thinking कि what can I do next? What can I do next? What can I do next? So explored and experimented with many things in dot art. Yeah, but it just comes when you are into it. But your art is so beautiful things you do. Thank you. I think. You should wind up. Yeah. So thank you so much. Thank you so much, Sharmila and Nimmi, for coming and giving your precious time to us. It was really wonderful. And just thank you. A lot of gratitude to both of you. Thank you. Thank you. Thank you for inviting me. And yes, bye. Yeah. Thank you. Bye Bye. bye. Bye-bye. Thank